किया ना, साइलेंट किया ना, आवाज कहाँ से? Hello children, our next topic is gametogenesis. So part 3 of the human reproduction. The process of formation of haploid gametes from diploid germ cells is known as gametogenesis. Gametogenesis occurs in the primary sex organs or the gonads. Primary sex organs in the males are the pair of testes and in the females are the pair of ovaries. They produce sperms and ovum respectively. The process of production of sperm is known as spermatogenesis and the production of ovum is known as oogenesis. Another difference between the two is spermatogenesis begins at puberty and oogenesis starts before birth, that is at embryonic stage. First, let us take spermatogenesis, formation of haploid male gametes, that is known as a spermatogenesis. It occurs in the seminiferous tubules of the testes. So we discussed the testes, they have a number of lobules in which in each lobule there are 1 to 3 seminiferous tubules. In these seminiferous tubules, spermatogenesis occur. Inner wall of the seminiferous tubule, it has two types of cells, germ cells and Sertoli cells. Germ cells, they are also known as spermatogonia cells. They help in formation of sperms and yet they develop into sperms, and Sertoli cells, they provide nourishment to developing sperms. In the two stages the process occurs. In the first stage, spermatids they are formed, and in the another stage differentiation in spermatids occur and they change into spermatozoa, that is a spermiogenesis. First, spermatid formation, again three substages: multiplication phase, growth phase and then maturation. In the first multiplication stage, we see that male germ cells or the spermatogonia, they undergo mitotic divisions and they form a number of spermatogonia. So, number is increased by the mitosis. Chromosome number is same, it is still diploid with 46 chromosomes. Then these undergo growth, the cells छोटे बने आफ्टर डिवीजन वो एनलार्ज हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, इंक्रीजेस साइटोप्लाज्म. अब हम इसको कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. स्टिल दे आर डिप्लॉयड विद 46 क्रोमोसोम नंबर. Then primary spermatocyte, they undergo meiotic division. As we know, sperms, they are always haploid. In the first meiotic division, that is a reductional division, they change into the secondary spermatocyte. Two daughter cells, दोनों haploid, secondary spermatocyte. फिर second meiosis के बाद again two daughter cells are formed by each secondary spermatocyte, and these are known as spermatids. So these are haploid with 23 chromosomes. So this is the growth phase, and there is a meiosis. After meiosis, the spermatids, they are formed. Now spermatids से spermatozoa बनना, this is known as spermiogenesis. This is a differentiation process. यानी कि इसमें कोई डिवीजन नहीं होती, एक से एक ही बना है, कोई क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं है, सिर्फ स्पेशलाइजेशन हो जा रही है और सेल डिफरेंशिएशन इज देयर. So in the maturation phase, there is formation of spermatids and then spermiogenesis. So a release of sperms, that is known as spermiation. So after spermiogenesis, sperm head embedded in the Sertoli cell and released from seminiferous tubule. तो seminiferous tubule से जब बाहर आते हैं sperms, तो उनको कहते हैं spermiation. तो तीन terminologies हैं. One is spermatogenesis, which is the whole process. ये पूरा process spermatogenesis है. ठीक है. सेकेंड इज स्पर्मियोजेनेसिस, वो सिर्फ ये पार्ट है, ये पार्ट है स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनना, दैट इज द स्पर्मियोजेनेसिस. उसके बाद स्पर्मिएशन, रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम द seminiferous tubules, that is known as spermiation. Then we come to the
role of hormones in the process of spermatogenesis is gonadotropin releasing hormones. They are released by hypothalamus, as we have discussed in the 11th class, that hypothalamus endocrine glands, this releases releasing hormones. So GnRH, releasing hormone that is secreted by hypothalamus. Hypothalamus जो हार्मोन रिलीज करता है, it stimulate interior pituitary lobe and that secretes two hormones, LH and FSH. These are known as the gonadotropins. So gonadotropin releasing hormone stimulate interior pituitary gland to release gonadotropins. Two gonadotropins are luteinizing hormone LH and follicle stimulating hormone FSH. LH, luteinizing hormones, it act on the Leydig cells. Leydig cells कौन से हैं? जो दो seminiferous tubules के बीच में present होते हैं, that is the interstitial cells भी हम उनको कहते हैं और Leydig cell भी कहते हैं. वो उनको उसको stimulate करता है ताकि वो एंड्रोजन रिलीज कर सके. एंड्रोजन जो है that stimulate the process of spermatogenesis. तो उनसे spermatogenesis process होता है. Follicle stimulating hormone that stimulates Sertoli cells, and they help in secretion of certain factors which help in the process of spermiogenesis. तो Sertoli cells को stimulate करते हैं to stimulate the process of spermiogenesis, यानी कि differentiation of spermatids into the sperms. So this is how the whole process is controlled by the hormones. Then the typical sperms, ये जो process है that is not in detail in your textbook. This is just how this spermatid changes into the sperm. So this is the final structure of the sperm and this is the spermatid. This whole process is spermiogenesis. So slowly there are changes occur. There is development of different organelles. Nucleus एक जगह रह जाता है, उसके ऊपर एक head like structure develop हो जाता है जिसको कहते हैं acrosome. Then flagellum is there and mitochondria एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं. In this way, excess of cytoplasm is here and the whole this differentiation finally changes into the structure of the sperm. So in your syllabus there is the structure of the sperm. Then, and this is the final structure of the sperm. In the human sperm, it consists of head. It has the nucleus. Mainly nucleus is concentrated in the head. And it is covered by this cap-like structure that is known as acrosome. It is filled with the special enzymes that help in the penetration in the ovum, यानी कि fertilization में help करते हैं. Then there is a small neck portion, head और middle piece के बीच में ये छोटी सी neck portion है. Then middle piece that is rich in the mitochondria. This provide energy for mobility of the sperms. And then this is the tail or the flagellum. This is the structure of the mature sperm. Then different parts. Head we have already discussed. It mainly consists of nucleus as anterior cap. Acrosome contains special enzyme, hydrolytic enzyme made from Golgi complex during division, help in the fertilization of ovum. Neck connecting head and middle piece, and it contains centrioles. Then middle piece, it contains many mitochondria, provide energy for movement of the sperm. And then tail, that is a long cylinder, help in the movement of the sperm. For the normal fertility, 60% sperms must have a normal shape and at least 40% sperm, they should be mobile, and in one ejaculation 200 to 300 million sperms they are released. So such a large number is released in one ejaculation. Then next we come to the process of oogenesis. Here just like the spermatogenesis is formation of ovum from the
oogonia, that is the oogenesis, diploid oogonia cells, it occurs in the ovary. जैसे हमने पहले भी किया था कि oogenesis embryonic stage पे स्टार्ट हो जाती है, यानी कि पहले बर्थ से पहले. Now oogonia जो है, they are the gamete mother cell diploid at birth. Many of these are present in the fetal ovary. फीटल ओवरी में बहुत सारे oogonia होते हैं, और इसके बाद इसमें डिवीजन शुरू हो जाती है. प्रोफेज 1, जैसे ही मियोसिस शुरू हो जाती है, प्रोफेज 1 में वो रुक जाती है. इट इज़ अरेस्टेड एट द प्रोफेज 1 एंड उसके बाद वो आगे नहीं होती है. फिर प्राइमरी oocyte जो है that changes into that is enclosed in the primary follicles. So primary oocyte के बाहर कुछ granulosa cells, तो अब इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं primary follicles. So ये follicles present होते हैं at the time of birth, primary oocyte containing primary follicles, और many follicles बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक डीजेनरेट हो जाते हैं. बर्थ के बाद नो मोर oogonia आर प्रोड्यूस. जस्ट एक जैसे स्पर्मेटोगोनिया हमने किया था, माइटोसिस के बाद वो नंबर बढ़ता जाता है, स्पर्मेटोगोनिया बनती है, लेकिन oogonia जितने बर्थ के टाइम पे हैं उसके बाद कुछ भी ऐड नहीं होता. 60,000 to 80,000 दे आर प्रेजेंट इन ईच ओवरी एट प्यूबर्टी. कुछ डिजेनरेट होने के बाद पहले मिलियंस ऑफ थाउजेंड्स होते हैं, मिलियंस, और उसके बाद ये इतने रह जाते हैं प्यूबर्टी तक आते आते. सो प्राइमरी फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल हमने क्या किया था, प्राइमरी oocyte, उसके बाहर थोड़े से सेल्स ग्रेनुलोसा सेल. अब उसके बाहर कुछ और ग्रेनुलोसा सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं, अनदर मेम्ब्रेन थिक का. फिर हम इसको क्या लेते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल्स. सेकेंडरी फॉलिकल्स के बाद टर्शरी फॉलिकल्स. देखो हम बात कर रहे हैं प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, लेकिन बीच में oocyte क्या है, वो अभी भी प्राइमरी oocyte है. ठीक है, फॉलिकल्स दैट इज अ डिफरेंट टर्मिनोलॉजी, oocytes दैट इज अ डिफरेंट टर्मिनोलॉजी. सेकेंडरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल्स में जब एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी डेवलप हो जाती है, दैट इज नोन एज एंट्रम, और थिका भी थिक हो जाती है. इट हैज इंटरनल लेयर एंड एक्सटर्नल लेयर, वेस्कुलर एंड फाइब्रस लेयर, तब हम इसको कहते हैं टर्शरी फॉलिकल्स. बट स्टिल इट कंटेन इनसाइड प्राइमरी oocyte. क्योंकि अभी भी उसमें फर्स्ट मियोसिस भी इनकम्प्लीट हुई है, अभी प्रोफेज के बाद वो बंद हो गई थी. इसके बाद फर्स्ट मियोटिक डिवीजन आकर, इन विच 2 cells are formed, unequal sized. One is secondary oocyte, another is first polar body. So unlike spermatogonia where 2 equal size cells are formed, here unequal size. Now it is called the secondary oocyte. ठीक है, सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट कहाँ पे है, इन द ग्राफियन फॉलिकल में. टर्शरी फॉलिकल्स दे मेच्योर इनटू ग्राफियन फॉलिकल्स और मेच्योर फॉलिकल्स. सो इसके बाहर oocyte के बाहर, नॉट फॉलिकल, oocyte के बाहर एक जोना पेलुसिडा लेयर आ जाती है सेकेंडरी oocyte के बाहर, और उसके बाहर वैसे ग्रेनुलोसा सेल, थिका सेल, और एक कैविटी बीच में होती है. दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज ग्राफियन फॉलिकल. दिस ग्राफियन फॉलिकल ruptures and releases ovum. Here you see the ovary. Here different stages they are present, and this is the developing oocyte. बीच में प्राइमरी oocyte है, ये बहुत सारे प्राइमरी oocyte, ये भी प्राइमरी oocyte. कुछ ग्रेनुलोसा सेल्स बन गए, कुछ और ग्रेनुलोसा सेल्स इकट्ठे हो गए. बीच में अभी भी प्राइमरी oocyte है. इसमें मियोसिस हुई तो ये सेकेंडरी oocyte बन गया. ठीक है, और सिमिलरली ये जो है, ये प्राइमरी oocyte से ये क्या बना, सेकेंडरी फॉलिकल. फॉलिकल बड़ा होता गया, यानी कि इनकी जो साइज बड़ा हो रहा है ना, और सेल्स ऐड होते आ रहे हैं. फॉलिकल्स बड़े हो गए लेकिन अंदर प्राइमरी oocyte है. फॉलिकल और बड़ा हो गया लेकिन अंदर प्राइमरी oocyte है, और ये पूरा हम क्या देते हैं, टर्शरी फॉलिकल. टर्शरी फॉलिकल में थोड़ी थोड़ी ये कैविटी बीच में बननी शुरू हो गई. ये जो कैविटी दिख रही है, दिस इज एंट्रम. फिर ये कैविटी और डेवलप हो गई, और बड़ा हो गया, और मियोसिस भी कंप्लीट हो गई, तो अब ये बन गया सेकेंडरी oocyte.
और ये पूरा बड़ा, दिस इज द ग्रेफियन फॉलिकल, या फिर हम इसको मैच्योर फॉलिकल कहते हैं। अभी सेकेंडरी oocyte है। सो दिस स्टेज, जब ये ग्रेफियन फॉलिकल है, अब ये रिलीज हो जाता है, ओवरी से बाहर निकल गया एग हम इसको एज सच वैसे ही कह रहे हैं, ओवम कह रहे हैं, बट एक्चुअली इट इज नॉट ओवम। अभी भी हैप्लॉइड तो है सेकेंडरी oocyte, बट अभी एक ही मियोसिस हुई है। स्टिल इसका जो टेक्निकल नेम है, इट इज सेकेंडरी oocyte। सिर्फ वैसे ही हम इसको कन्वेंशनल इसको ओवम कह देते हैं, बट इट इज नॉट ओवम, इट इज स्टिल सेकेंडरी oocyte। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज ओव्यूलेशन, रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द ओवरी। ओव्यूलेशन हो गई। अब ये जो बचा खुचा पार्ट है ग्रेफियन फॉलिकल का, दिस चेंजेस into the corpus luteum, ruptured Graafian follicle, and this acts as an endocrine gland. It secretes the hormone progesterone that help in the pregnancy because it is required, क्योंकि ओवम रिलीज होता है। और यहाँ पे फिर से ये अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो ये फिर से डिजेनरेट हो जाता है। So this is the diagram of the mature follicle. Here you can easily see this big cavity, fluid filled cavity, antrum, और बीच में ये है secondary oocyte. So oogenesis, here you see oogonia, शुरू में जो मतलब बिफोर बर्थ जो है ये डिवीजन होके बहुत सारे oogonia बन गए, लेकिन बर्थ के बाद नहीं। इसके बाद ये बड़े हुए, प्राइमरी oocyte बन गया। इसमें फर्स्ट मियोसिस शुरू हुई लेकिन कंप्लीट नहीं हुई, ये यहाँ पे सिर्फ प्रोफेज 1 तक ही हुई। ठीक है, सो दिस अकर्स, इसके बाद जो है यहाँ तक प्यूबर्टी तक ही है प्राइमरी oocyte। उसके बाद फर्स्ट मियोसिस कंप्लीट होगी एंड देन इट इज अ सेकेंडरी oocyte इज फॉर्म्ड and first polar body, unequal size, first polar body is formed. Then second meiosis कब होती है? When it come in contact with the sperm, तो फिर उसके बाद meiosis 2 complete ovum and then second polar body is formed. So this is the process is oogenesis. Oogenesis starts at the embryonic stage age. oogonia बन जाते हैं, no oogonia added after the birth, एंड म्योसिस 1 पे के बाद ये खत्म हो जाती है डिवीजन, प्राइमरी oocyte तक रहती है। उसके बाद प्यूबर्टी में फिर जाके डिवीजन स्टार्ट होती हैं, इट चेंजेस इनटू द सेकेंडरी oocyte एंड 1 egg, और यू कैन से दैट इज रिलीज्ड फ्रॉम द ओवरी इन 1 month at puberty. So these are the different stages is of the oogenesis, is multiplication, growth phase, then maturation stage age. So this is the oogenesis is and in the final product is the ovum. But here you see that single ovum is produced. तो वहाँ पे हमने देखा था कि एक ही स्पर्मेटोगोनिया से 4 जो है स्पर्मेटोजोआ दो आर प्रोड्यूस्ड and many spermatogonia are produced, or 200 to 300 कितने sperms they are released in one ejaculation. Here only single ovum that is released. So secondary oocyte, it undergoes meiosis division to form a large ovum and a small second polar body, and then a new membrane, zona pellucida, is developed. What is the fate of these polar bodies? That is still not very clear. What happens to these polar bodies? So during oogenesis 4 cells are produced. Among these only one is functional. ovum सिर्फ एक ही functional रहता है. So primary germ cell in the embryo, differentiation, ये oogonia, mitotic division से ज़्यादा oogonia बने, फिर प्राइमरी oocyte एंड देन सेकेंडरी oocyte, ओव्यूलेशन आकर। लेकिन ओवम कब बनता है, यानी कि सेकेंड मियोसिस कब होती है? व्हेन इट कम इन कांटेक्ट विद द स्पर्म। तो यहाँ पे आप देखो कि जैसे ये स्पर्म की एंट्री हो रही है ओवम में, तब जो है डिवीजन इज कंप्लीटेड एंड ओवम इज प्रोड्यूस्ड।
So this completes your oogenesis is, and they are the basic differences between the spermatogenesis and oogenesis. So next we will take next menstrual cycle next time. Thank you so much.